Today I am going to discuss a very important topic of inorganic compound known as coordination compound. First topic of this chapter is addition compound. The compound which is formed by crystallization of solution containing two or more compounds in a definite ratio is called addition compound. For example, potassium sulfate and aluminum sulfate are dissolved in water, and upon crystallization you will get potash alum with formula K2SO4 Al2SO4 24H2O. KCl and MgCl2 are dissolved in water, and upon crystallization you will get KCl MgCl2 6H2O. Crystalline solid known as carnallite. On dissolving ferrous sulfate and ammonium sulfate in water and upon crystallization we will get more salt of formulas FeSO4 NH4 whole 2SO4 6H2O. Crystallization of solution containing copper sulfate and ammonia, we will get copper sulfate tetraamine crystalline compound in solid state. On crystallization of solution containing potassium cyanide and ferrocyanide, we get crystals of potassium ferrocyanide. The addition compound can be divided in two classes. Double salt. The addition compound which is stable in solid state but completely dissociates into aqueous solution is called double salt. Solution में जाके वो completely dissociate कर जा रहा है. So solution of a double salt responds analytical test for all of its constituent ions and molecules. Potash alum, ये solid state का formula है. In solution it dissociates into K plus, Al3 plus and sulfate ion, and this H2O mixed with goes with solvent water. More salt, solid state में ये formula है aqueous solution जाके ferrous ion, ammonium ion and sulfate ion में dissociate कर रहा है. Carnallite, solid state में in aqueous solution dissociate to form potassium ion, magnesium ion and chloride ion. So it gives analytical test for all of its constituent ions and molecules. Now comes to the main topic, coordination compound. The addition compound which is stable in solid state as well as in solution is called coordination compound. तो कैसे समझ रहा है कि solution is stable है? The solution of a coordination compound does not respond analytical test for all of its constituent ions and molecules. कुछ का टेस्ट मिलेगा, कुछ का टेस्ट नहीं मिलेगा. जैसे copper tetraamine sulfate. In aqueous solution it forms copper tetraamine cation and sulfate anion. ये सिर्फ it gives only taste of sulfate ion, not copper ion and ammonia molecule. Potassium ferrocyanide in aqueous solution forms potassium ion and ferrocyanide. So only test of potassium ion is positive and test of ferrous ion and cyanide ion are negative. PTNH3 whole 2 Cl2 aqueous solution में ये नॉन आयोनाइजेबल मॉलिक्यूल है, किसी का टेस्ट नहीं मिलेगा. The coordination compound consists a non-ionizable molecule or ion consisting metal atom or ion associated with two or more same or different molecules or ions with at least one donor atom is called complex ion. जैसे आप देख रहे हैं, complex ion is denoted in a square bracket. In this complex ion, copper ion is associated with four ammonia molecules. In this complex, ferrous ion is associated with 6 cyanide ion. In this complex, Pt2 plus ion is associated with 2 ammonia molecule and 2 Cl minus ion. Now, ligands, the most important part of complex compound. The molecular ion consisting at least one donor atom, maybe two or more, attached to metal atom by coordinate bond in complex is called ligand. The ionizable ion within outside the square bracket, complex ion के बाहर जो ionizable ion दिए जा रहे हैं, these are called counter ions.
coordination number. The number of donor atoms of ligands attached to metal atom in complex is called coordination number. Number of ligand नहीं, number of donor atoms of ligand. लिगेंड में 2 और मोर डोनर एटम्स हो सकते हैं. 2 अमोनिया मॉलिक्यूल का नाइट्रोजन एटम से जुड़ा है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 2. 4 अमोनिया मॉलिक्यूल के नाइट्रोजन से जुड़ा है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4. 6 साइनाइड आयन के कार्बन से जुड़ा है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6. कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन. The ligands have a definite spatial arrangement around metal ion in complex is called coordination polyhedron. Ligands have definite arrangement. This arrangement depends on coordination number. Coordination number 6 के लिए arrangement octahedral होगा. 4 के लिए ये जो arrangement है depends on coordination number of metal atom and also hybridization. Coordination number 4 में tetrahedral and square planar दोनों हो सकता है. ये डिपेंडिंग ऑन हाइब्रिडाइजेशन आगे डिस्कस होगा. 5 में ट्राइगोनल बाइपिरामिडल और स्क्वायर पिरामिडल होता है, अगेन डिपेंडिंग ऑन हाइब्रिडाइजेशन. कोऑर्डिनेशन नंबर 2 के लिए लीनियर होता है. होमोलिप्टिक एंड हेट्रोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स. द कॉम्प्लेक्स कंसिस्टिंग ओनली वन टाइप्स ऑफ ligands is called homoleptic complex, and complex consisting 2 or more different types of ligands are called heteroleptic complex. These are examples of homoleptic complex, these are examples of heteroleptic complex. Classification of ligands based on charge: anionic ligand, neutral ligand and cationic ligand. Cationic ligands are rare. Classification of ligands based on number of donor atoms. Monodentate ligand. These ligands have only one donor atom. Bidentate ligand. Ligands having 2 donor atoms. Tridentate ligand. Ligand having 3 donor atoms. Diethyl triamine. Tetradentate ligand. Ligand having 4 donor atoms. नेम विथ एब्रिविएशन इसका याद रखेंगे. पेंटाडेंटेड लिगेंड विथ 5 डेंटेड डोनर एटम, 2 नाइट्रोजन एंड 3 ऑक्सीजन नेगेटिवली चार्ज. हेक्साडेंटेड 6 डोनर एटम, इथिलीन डायमीन टेट्राएसीटेट. एम्बीडेंटेड लिगेंड. इट इज ए मोनोडेंटेड लिगेंड कंसिस्टिंग 2 डोनर एटम. बट कोऑर्डिनेशन कैन अकर आइदर ऑफ द 2 डोनर एटम. किसी एक ही से होगा. तो 2 डोनर एटम के साथ ये मोनोडेंटेड है. जैसे Cn माइनस में कार्बन डोनर है तो साइनो, नाइट्रोजन आइसोसाइनो. NO2 माइनस का नाइट्रोजन डोनर एटम है तो नाइट्रिटो N. ऑक्सीजन डोनर नाइट्रिटो O. SCN माइनस का सल्फर डोनर एटम है थायोसाइनेटो S. नाइट्रोजन डोनर एटम है थायोसाइनेटो N. फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड. Some monodentate ligand can use different number of donor atoms in different ligands. मतलब उनकी denticity can change. This is called flexidentate ligand. EDTA 4 minus ethylene diamine tetraester. इसकी maximum density 6 होती है, but in some complex it can use only 4 atoms. Chelating ligand. When a polydentate, bidentate, tridentate, tetradentate, pentadentate attached to metal atom through 2 or more donor atoms forming 5 or 6 member ring, जैसे ये डाइमिथाइल ग्लाइकोजेनेट है, 2 नाइट्रोजन से जुड़ के 5 member ring बना रहा है. This is called chelating ligand, and the chelating ligand in complex is responsible for greater stability. This is called chelating effect. IUPAC system of nomenclature. इससे क्वेश्चन डायरेक्ट स्कूल एग्जाम में भी और नीट में सब में आते हैं. द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स मे बी सिंपल कैटायन विद कॉम्प्लेक्स एनायन, K4 विद कॉम्प्लेक्स. कॉम्प्लेक्स कैटायन इन स्क्वायर ब्रैकेट है और काउंटर आयन बाहर में. कॉम्प्लेक्स कैटायन विद सिंपल एनायन, कॉम्प्लेक्स कैटायन विद कॉम्प्लेक्स एनायन, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल and polynuclear complex containing 2 metal atoms. Rules for naming coordination compound. In case of ionic coordination compound, जिसमें complex cation या complex anion हो,
The simple ionic compound, जिसे पोटेशियम सल्फेट बोलते हैं, cation is named first and anion is named last. Now naming of complex ion, यहाँ ये main topic. In the name of complex, ligands are named first and metal atom or ion is named last. Now naming of ligands. In heteroleptic complex, there are two or more different types of ligands. Ligands are named in alphabetical order. Anionic ligands are named with replacing final E of its name thereby O. जिसे क्लोराइड से क्लोरिडो हो गया, सल्फाइड से सल्फीटो हो गया, सल्फेट से सल्फेटो हो गया, ऑक्जेलेट से ऑक्जेलेटो हो गया, सल्फाइड से सल्फीडो हो गया. फाइनली को रिप्लेस कर रहे हैं ओ के द्वारा. बट सब कॉमन एनायनिक लिगेंड्स आर नेम्ड एज फॉलो. कुछ कॉमन जो हैं, साइनिडो की जगह साइनो लिख रहे हैं, आइसोसाइनिडो की जगह आइसोसाइनो लिख रहे हैं, OH माइनस हाइड्रोक्सीडो होना चाहिए सो हाइड्रोक्सो, परऑक्सीडो होना चाहिए तो परऑक्सो लिख रहे हैं. न्यूट्रल लिगेंड्स आर नेम्ड एज देयर केमिकल नेम, जो कॉमन केमिकल नेम है. इथिलीन डायमीन या IUPAC नेम लिखें तो इथेन 1,2 डायमीन, pyridine. Some common and neutral ligands are also have a special name. H2O aqua, CO carbonyl, NH3 amine. यहाँ एमीन में डबल एम होगा, और यहाँ जो आप इथिलीन डायमीन लिख रहे हैं उसमें सिंगल एम है. अमोनिया के लिए जब एमीन लिखेंगे तो डबल एम होगा. नाइट्रोसिल. नेम ऑफ कैटायनिक लिगेंड given with suffix IUM, nitrosonium, nitronium and hydrogenium. Ambidentate ligand is named by denoting symbol of the donor atom after its name. जैसे नाइट्रो में, नाइट्रिटो में ऑक्सीजन डोनर एटम है तो, और नाइट्रिटो का नाइट्रोजन डोनर एटम है तो नाइट्रिटो एन, नाइट्रिटो एन. बाय ब्रिजिंग लिगेंड पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स में आर नेम्ड विथ प्रीफिक्स म्यू हाइफन. मल्टीप्लिसिटी ऑफ सिंपल लिगेंड नंबर in complex is denoted by di, tri, tetra, penta, hexa before its name. Multiplicity of complex ligand. Complex ligand के बारे में जाने, वो ऐसा ligand जिसके नाम में डाई ट्राई शब्द यूज हुआ, जैसे इथिलीन डायमीन टेट्राएसीटेट. इसको कॉम्प्लेक्स लिगेंड की कैटेगरी में रखेंगे. तो द नेम ऑफ कॉम्प्लेक्स लिगेंड, मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स लिगेंड इज दिस थ्रीस टेट्राकिस और बिफोर इट्स नेम लिगेंड प्लेस इन स्मॉल ब्रैकेट. लिगेंड का नाम स्मॉल ब्रैकेट में होगा, उससे पहले ये कंफ्यूजन. जैसे इथिलीन डायमीन में आप बोल रहे हो डाई इथिलीन डायमीन, इट क्रिएट्स कंफ्यूजन, इसलिए यहां दिस यूज होगा. नेमिंग ऑफ मेटल एटम और आयन. इन केस ऑफ कैटायनिक और न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स, सिंपल नेम ऑफ मेटल एटम is used, but in case of an ionic complex, name of metal atom is given with suffix 8. Oxidation number of metal atom in complex is denoted by Roman numerals after its name in a small bracket. तो नेमिंग में सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेंगे. तो यहाँ आयरन +2 स्टेट है, अब नाम दे रहे हैं. पहले तो पोटेशियम सिंपल कैटायन का नाम आ गया. नाउ हेक्सासाइनो फेरेट 2, कॉपर इन +2 स्टेट. तो टेट्राएमीन कॉपर 2 सल्फेट, Na in 0 state, tetra carbonyl nickel 0. Chromium in +3 state, the dichlorido heteroleptic alphabetical order. And bis-ethylene diamine, chromium 3 chloride. Cobalt in +3 state, potassium trioxalato cobalt 3. Platinum in +2 state with ambidentate ligand, तो पहले डाइएमीन क्लोरिडो एंड नाइट्रिटो एन, नाइट्रोजन इन डोनर एटम प्लेटिनम 2. पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स 4H2O with iron in +2 state, tetra aqua +3 state, iron in +3 state.
टेट्राइको आयरन 3, अब ब्रिजिंग ग्रुप, न्यू एमिडो एंड न्यू हाइड्रोक्सो, फिर टेट्राइको आयरन 3 सल्फेट. Rules of writing formula of coordination compound. The complex में metal atom is denoted first, and after this ligand denoted in alphabetical order. In case of abbreviated ligand, जैसे ethylene diamine के लिए EN लिखा जा रहा है, the first letter of abbreviation is considered to decide alphabetical order. Entire complex is enclosed in a square bracket, and polyatomic ligands are enclosed in a small bracket. This is Cr3 plus 2En and 2Cl minus. अल्फाबेटिकल ऑर्डर में क्लोरीन पहले आएगा, En पहले, तो Cl2En होल, CO3 plus amine, aqua and bromido. That's all. This is नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के वैलेंस बॉन्ड थ्योरी डिस्कस करेंगे. थैंक यू फॉर बीइंग विथ अस. सब्सक्राइब माय चैनल.